Hello friends, Sat Shri Akal. Welcome to the CBL's English classes for the CSAT paper of the PCS exam. I hope ਤੁਸੀਂ properly ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ tips ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ follow ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਫ ਇਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। This will become very easy for you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। just flip through the pages। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਡ them again and again। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, every day few words। fine, ਚਲੋ we move ahead with today's lecture 5। Our focus will be on vocabulary, grammar and comprehension. Why these? Because vocabulary and grammar are the stepping stones to any language. जब तक ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ words ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ meaning ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, grammatical usage ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ language proficiency ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। So vocabulary which what will be the focus? Antonyms and synonyms, meanings, comprehension, unseen passages, grammar which prepositions करेंगे and practice करते रहेंगे, because without practice you cannot be perfect। Time for some vocabulary practice। Okay, choose the most similar to admonish। Okay, पहला से admonish का meaning देखेंगे। admonish मतलब किसी ने गुस्सा करना या थोड़ा जा चिड़की देना, reject करना। approve होता है भी किसी ने अपनी plan pass करती, my plan was approved by the authorities। चैलेंज किसी ਨੂੰ ਚੈलेंज करना कि चलो जी ਤੁਸੀਂ करके दिखाओ ਇਹ ਕੰਮ। reprimand means गुस्सा करना, improvement वास्ते कहना। and preoccupy simple word है, he was occupied with something else। so the correct answer would be reprimand। similar word है, ध्यान रखना सी synonym हैगा है। okay, second question, choose the most similar word to alleviate। alleviate ਦਾ मतलब है किसी ਦੀ suffering या किसी ਦੀ problem ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। right, the government will try to alleviate the problems of the poor people। abate ਦਾ मतलब है ਉਹ ऐसे similar word ਹੈਗਾ ਹੈ, abate और alleviate the similar words ਹੈਗੇ। abate ਦਾ मतलब ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। the storm will abate by the evening, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। fascinate ਹੋਣਾ मतलब ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ fascinate ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I'm fascinated by the stars। beguile ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। the voters were beguiled by the false claims of the politicians। abbreviate means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ short ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ abbreviation ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ DR। so the correct answer for this will be abate। choose the most similar to denounce। denounce ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, denounce means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ reject ਕਰਨਾ। diminution is also, it's another word for reduction। encourage मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। boycott means ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ boycott ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ boycott ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ accept ਕਰਦੇ। and detest means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ hate ਕਰਨਾ। this is a higher degree। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ denounce ਦਾ similar word ਹੈਗਾ boycott। the synonym for denounce will be boycott। I detest those who lie, कि मैं बहुत नफरत करदी हां ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ हैं। जैसे एक खाली simple rejection हैगा, we will not go to detest। similar word to equivocal। equivocal ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब there can be more than one meaning to a particular sentence। जो हूँ मैं स्टेटमेंट देती, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ meaning ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ interpretation नहीं हैगी। secure means safe, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਕਵੀਵੋਕਲ ਨਾਲ। intolerant means ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, he is very intolerant by nature। uncertain, that is the correct word for equivocal। and spurious means something which is fake, ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। he sells spurious medicines, ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ। so the similar word for equivocal will be uncertain, ਵੀ ਕੋਈ certainty ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ meaning ਹੈ। similar to impediment। impediment ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। he is an impediment for my success, his behavior is an impediment for my hard work। ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। okay, we'll look at the options।
वैनिश मीन्स गुम, हाँ बिल्कुल गायब हो जाना. द थीफ वैनिश्ड इन द क्राउड, वो बिल्कुल गुम गया. अडॉर्न मीन्स टू डेकोरेट. प्लीज अडॉर्न द हॉल या अडॉर्न द रूम विद फ्लावर्स. ऑब्स्ट्रक्शन ਦਾ मतलब ये रुकावट. एंड कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब कौन दे नाल आपां करदे आ, अकरिंग एट सेम टाइम. ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, these are concurrent events. The birth of these two people in different countries, these two leaders, is a concurrent event. Suppose ਇੱਕੋ ईयर ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਇਜ਼ obstruction. Okay, seventh word, similar word to exculpate. Exculpate is to free from some accusation, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ. We'll look at the other meanings. Arraign, arraign means to call somebody to court. Formally ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ guilty prove ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. Augment is ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ. ਕਿਸੇ his efforts will augment my studies. ਮੈਨੂੰ बढ़ोतरी मिलेगी मेरी पढ़ाई ਵਿੱਚ. Assuage ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ suffering ਘੱਟ ਕਰਨਾ. These efforts made by the government will assuage the suffering of the public. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ exculpate ਦਾ similar meaning ਹੈਗਾ defend. ਇਹ opposite ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Arraign ਜੇ antonym ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, it would have been arraign, ਪਰ ਇਹਨੇ synonym ਪੁੱਛਿਆ similar word, the answer will be defend. Okay, antonym of munificent. Munificent मतलब ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, bountiful, a lot. So we'll look at the words which are given. Frugal, frugal means ਘੱਟ ਹੋਣਾ. He lives on frugal means. Deficient means less than required. I'm deficient in these vitamins, या I'm iron deficient. भी कमी हैगी iron दी. Courteous means a person who's very polite in behavior, उन्हें पता है किस तरह behave करना है. And indiscreet, indiscreet ਹੁੰਦਾ बड़े कई लोग बड़े careless जो होंगे हैं, they let out secrets, मतलब ध्यान नहीं रखते कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ हैं. They are very indiscreet about their love affair, कि they are not bothered कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ. They are very open about it. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ munificent ਦਾ antonym ਹੋਏਗਾ frugal. Okay, question 9, antonym of subterfuge. Okay, and subterfuge the actual meaning की है trickery, धोखाधड़ी. Right, we'll look at the meanings of the words which are given. Deceit, deceit भी हुई ਹੁੰਦਾ है धोखाधड़ी. So deceit will be synonym of subterfuge, पर सानू की चाहिए antonym. Okay, so sabotage is जान के कोई चीज destroy करना. The public sabotaged the government buses. Frankness मतलब आराम नाल बड़ी straight forward कोई इंसान गल करते हैं, या बड़ा खुला व्यवहार. And demolish, demolish is again किसी चीज तोड़ना. So the answer for this will be frankness. Opposite in meaning to haughty. Haughty means someone who's very proud, और अपने ਨੂੰ बहुत ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ behave ਕਰਨਾ. So there are synonym ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. We'll look at the antonym also. Arrogant ਦਾ मतलब यही ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ, कि दूजे ਨੂੰ नीवा समझना और अपने आप ਨੂੰ ਉੱਚਾ समझना. So that's called arrogant behavior. So arrogant will be synonym for haughty, पर ਸਾਨੂੰ antonym चाहिए. We'll look at other meanings. Submissive मतलब दूजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, अपना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ. Mediocre, average, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ haughty ਨਾਲ. Devout means a person ਜਿਹੜਾ religious ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो opposite हैगा haughty ਦਾ, that will be submissive, मतलब दूजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ. haughty ਹੁੰਦਾ ਹੈ they are proud of their own self, और बड़ा अपना कोई stand ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ हैं. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ this is the correct answer, the opposite for haughty. Choose one that is opposite in meaning from resentment. Resentment मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਕਿਸੇ ਦੇ against ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ feeling ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ. So we'll look at the options which are given. Profane, profane means which is against religion, which does not favor religion. कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ behavior which is not spiritual या not religious. जिस तरह ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ profane paintings, right? Profane writing, profane speech. That leader gave a profane speech, कि ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ speech ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ religious ਆਪਣਾ fundamentals ਦੇ against ਸੀਗੀ. Obdurate, obdurate means stubborn, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਿਲकुल ਕਿਸੇ ਦੀ point ਨਾ ਦੇ ਸੁਣਨਾ. His obdurate behavior
in the polls. Like the politician was obdurate, he did not listen to any suggestions. Content मतलब अपना असंतुष्ट जो हैगा ठीक है, and languish means to get weaker या और कंडीशन माड़ी हो जानी. The thief languished in jail. So the correct answer, the opposite to resentment will be content. Resentment मतलब अंदरों अपना खिंच हो ही रहने की प्रॉब्लम है सानू की करिए एंड कंटेंट मीन्स की जो है तसल्ली है इंसान नू. Choose one that is opposite in meaning from congenial. Congenial मतलब बड़ा फ्रेंडली जिहा बिहेवियर किसी दा होना. Congenial environment normally use करेदा से word. So the synonym for that will be companionable, कि a person who's very friendly and very good with people. Demonic मतलब जिस तरह राक्षस प्रवृत्ति दा कि बड़ा गुस्से वाला एंड किसी नाल बना के ना रखन वाला. Incompatible is the correct answer as it is मतलब किसी नाल मेल जोल वाला बंदा नहीं हैगा, किसी नाल तालमेल नहीं बैठदा. And aberrant is a person या behavior है which जरा कहंदा ना लीक तो हट के कि these are the norms, ए ते बंदा फॉलो नहीं करदा. This is aberrant behavior. Aberrant तो एक और वर्ड आंदा है aberration, right? कि मतलब जो नॉर्मल बनया होया है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हां तो हट के चलना, that's called an aberration. His behavior is an aberration. So the correct answer is incompatible. Choose one that is opposite in meaning to foreboding. Okay, first what is the meaning of foreboding? For मतलब पहला ही किसी ਨੂੰ ख्याल आ जाना कि ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਅੰਦਰੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗਾ, that's called calm. या there is a calm in the environment, बड़ा शांतपूर्ण माहौल है. Now consternation. Consternation की ਹੁੰਦਾ है कुछ unexpected हो जावे. Foreboding होया पहला ही होने तो पहला ही इंसान ਨੂੰ अंदरों ही कुछ फील ਹੁੰਦਾ है. Intuition कहीदा जिन्हों ਆਪਾਂ, पर bad intuition हो गया ना उन्हों foreboding कहना है. Consternation ਹੁੰਦਾ है when something unexpected happens, तो बंदा एकदम anxious, anxiety हो जाए या panic हो जाए. Hypocrisy means कहना कुछ होर चाहना कुछ होर, उतों असी चंगे बंदे हैं कई बारी और अंदरों मीनिंग कुछ होर होंदा साडियां गल्लां दा. And adversary is opponent. He is my adversary in the poll, in the elections. He is my adversary in the game, in the match. So ethe foreboding the opposite hoega calm. Consternation will be synonym or similar word to foreboding. Okay, now we come down to the passage. Reading comprehension, passage 1. The Kingdom of Spain was created in 1492 with the unification of Kingdom of Castile and the Kingdom of Aragon. Unification matlab unify karna, jodna, getting one. For the next 3 centuries, Spain was the most important colonial power in the world. Colonial सानू पता है when you try to control other countries, जिस तरह ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया होया से इंडिया नू. Pronunciation is power. It was the most powerful state in Europe. देखो power तो अपा suffix लाता तो ना बन गया word powerful. Prefix भी ला सकते हैं अपा. Power तो पहला empower, overpower, right? तो असी पुरानी अपनी जो भी सिक्ख्या असी नाल नाल उन्हों भी रिवाइज करना है. Most powerful state in Europe and the foremost global power during the 16th century and the greater part of the 17th century. देखिए four अपना पहला विच पढ़िया foreboding विच foremost global power मतलब बड़ी important global power सी 16th century विच and major part of the 17th century. Spain established a vast empire. Vast means very huge, big, in the Americas. Stretching from means starting from या ऐना सिगा फैलिया होया from California to Patagonia and colonies in the Western Pacific. Spain's European wars, however, led to economic damage. Naturally जब इन्नी लड़ाइयाँ लड़नगे तो economically तो थोड़ा impact पड़ेगा ही. बहुत खर्चा होया and the latter part of the 17th century. लैटर असी पहला भी डिस्कस किया होया फॉर्मर एंड लैटर. फॉर्मर मतलब फर्स्ट एंड लैटर मतलब
later. Latter part of the 17th century मतलब बाद वाला part, later half saw gradual decline. Gradual means slow. Decline means downfall of power under an increasingly neglectful and inept Habsburg regime. Gradual means slow, inept मतलब inefficient. EFFINEFFICIENT. Efficient अगे IN लगाता तो inefficient बन गया. Inefficient Habsburg regime. Regime ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ rule. Regime ਦਾ मतलब ਅਸੀਂ system भी कहने हैं. Right, she follows a strict exercise regime, या जो भी अपना फॉलो करते हैं अपना सिस्टमैटिक अपना एक्सरसाइज करती है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ regime ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ. ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸ ਲੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ during the last part of the 17th century or last half of the 17th century and saw a gradual decline. Holi holi power cut होती गई. Decline means downfall. क्योंकि जो Habsburg regime आया that was not very efficient and that was not very particular और neglect करते रहे the economy नु. The decline culminated in the war. Culminated मतलब reached the highest point in the war of the Spanish succession. Succession की होता है जदों लड़ाई होंदी भी कौन राजा बनेगा, कौन इधर कंट्रोल करेगा. Where Spain's decline from the position of a leading Western power to that of a secondary one was confirmed, although it remained the leading colonial power. जदों decline होया economically भी ते ओदे नाल culminate होया means end विच यह होया कि war of succession होया कि कौन कंट्रोल करेगा. और स्पेन दी पोजीशन भी कट हो गई. पहला इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वे अपना वेस्ट विच, उस तो बाद दो इट वाज इंपॉर्टेंट वाज स्टिल लीडिंग पर अगे नालों इन्फ्लुएंस ओदी कट हो गई. सेकेंडरी वन वाज कंफर्म्ड कि दो हाले भी लीड कर रहा सी पर अगे नालों पावर और इन्फ्लुएंस कट हो गई बाकी यूरोपियन कंट्रीज विच. The 18th century saw new dynasty. Dynasty means अपना हायरार्की जड़ी होंदी कि फैमिली विच ही राजा तो अगे जड़ा बेटा राजा बनता है. That's called a dynasty. The Bourbons, which directed considerable effort towards the institutional renewal of the state, with some success, peaking in a successful involvement in the American War of Independence. 18th century विच की चेंज आया कि Bourbons की dynasty आई, वो फैमिली ने रूल किया जिन्हां दा ध्यान कंसिडरेबल मतलब वर्थ मेंशनिंग काफी ध्यान या काफी एफर्ट उन्होंने उससे लाया कि स्टेट इत्थे मतलब है गवर्नमेंट दी पावर्स नु होर स्ट्रॉन्ग किया जावे, होर एब्सोल्यूट बनाया जावे. पीकिंग इन मतलब किथे ओदा टॉप आया इन अ सक्सेसफुल इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उस वॉर विच स्पेन दा सक्सेसफुल अच्छा रोल रहा सीगा इन्वॉल्वमेंट करके. The end of the 18th and the start of the 19th centuries saw turmoil. Turmoil means disturbance. Panic. पूरा मतलब panic हो गया, disturbance हो गया पूरा. Unleashed. Unleashed मतलब it was there all over. खुले तरह था पूरा panic सीगा. Un is a prefix leash. Normally leash ऐसे कहने हैं जिसना when we tie the animal जिसना dogs दे गले च पाने अपना belt या collar विच ओदे नाल फड़न वास्ते जो उन्हें छाड़ दिता जावे तो it means unleash the dog कि उन्हें खुला छाड़ दियो. ਇਹਦਾ मतलब panic पूरा खुली तरह फैलिया होया सीगा throughout Europe by the French Revolutionary and Napoleonic Wars, which finally led to a French occupation of much of the continent including Spain. क्यों टर्मोइल सी, क्यों पैनिक सीगा? बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वॉर्स. उस तो बाद फाइनली की होया फ्रांस कुड ऑक्यूपाई
most of the continent, most of the European continent, including Spain. अभी हिस्टोरिकल साडा पैसेज हैगा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਗਰਡ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਗਰਡ मतलब started a successful but devastating war of independence। devastating मतलब नुकसान वाला, which damaged This started a successful but damaging war of independence that shattered, मतलब बहुत नुकसान किया the country and created an opening for what would ultimately be the successful independence of Spain's mainland American colonies। बहुत नुकसान तो बहुत होया, but ultimately led to the independence of Spain's colonies। ਜਿਹੜੀ अमेरिकन colonies ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ independence मिली। Following a period of growing political instability in the earlier 20th century, in 1936, Spain was plunged मतलब thrown, actually plunge ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ jump, he plunged into the swimming pool, मतलब jump ਕੀਤਾ, पर क्योंकि ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ meaning ਹੋਏਗਾ, jump नहीं कहांगे, he was thrown, भी हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, into a bloody civil war। bloody means बहुत नुकसान वाला, bloodshed वाला, civil लोकां दे विच उत्थे unrest हो गया। the war ended in a nationalist dictatorship। dictatorship ਦਾ meaning ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ dictator ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ruler ਹੈ, he had absolute powers, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ wishes against ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ countries ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we can go against the government, ਜੋ ਵੀ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ protest ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? we have full freedom। but dictatorship ऐसी country, ऐसा system ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ polity ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ he has absolute या total complete powers। Francisco Franco, which controlled the Spanish government until 1975। political instability मतलब ਉੱਥੇ ਕੋਈ stable ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ political conditions, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ rules ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। Okay, what was the result of Napoleonic Wars? A small part of the continent was occupied by French people. Spain was occupied by the French। Yes, see, war of independence was unable to yield any positive result। Yield matlab give। American colonies were destroyed after the war। So the correct answer is B। Spain was occupied by the French। पढ़े असी कि फ्रांस ने काफी कंट्रीज यूरोप ते कंट्रोल किया, इंक्लूडिंग स्पेन। What is the meaning of the term culminated? Okay, follow particular path, कोई particular रास्ता लेना या कोई particular चीज follow करनी, guide or transform। C, reach the highest point or introduce on a grand scale। It will be reach the highest point। All my efforts culminated in my success, कि वो ਉੱਥੇ पूरा result मिलिया। What is the summary of the passage? The rise and fall of a national empire। मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੂਰੇ passage ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ main gist? What is the gist? What is the summary? The downfall of successive regimes in Spain। downfall ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ dictatorship ਹੋਈ, तो that is not called downfall। Spain in 16th century, पर बाकी centuries ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, 17th, 18th, 19th। Spain in 18th century। So the summary of the passage will be A, the rise and fall of a national empire। What occurred in the latter part of the 17th century? War of succession confirmed the leading position of Spain। B, Spain was no longer regarded as a ruling colonial power। C, a vast empire was established in Europe। And D, power steadily declined under Habsburg regime। पढ़े ही होते कि they were not very efficient।
Okay, now we'll go to prepositions and phrasal verbs. Now what are prepositions? These are short words. Positions तो यहाँ पर देख लेने हैं, right? Example बहुत है at, in, on, under, which are used to show position, location, direction and time in English. मतलब जे noun या pronoun किसे नाल भी लगाने आनू, like the book is on the table. Book is a noun, टेबल भी नाउन है, तो ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। तो those words which express the relation or the position of the object, of the noun or the pronoun, that's called a preposition. On, in, into, over, above. और preposition ਦਾ usage, it's very important because बहुत छोटियां गलतियां भी कर ਦਿੰਦੇ ਆ, because every word has a different meaning. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। Some verb, now what are phrasal verbs? They can be followed by different prepositions which can change the meaning of the verb. Turn, turn मतलब मोड़ना, turn off मतलब बंद करना, turn off the lights या turn off the gas, turn back and turn down मतलब refuse कर देना। तो मतलब एक preposition दा देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ turn ਦਾ meaning किस तरह change हो रहा है। They have very different meanings. These special verb preposition combinations, ਇਹ देखो verb हैगा, turn is a verb and these are prepositions, off, back, down, इना करके meaning ही change हो रहा है, and these combinations are called phrasal verbs and they take time to learn. मतलब you need practice. A group of words which do the work of a verb, they are called phrasal verbs and these are very important. अब regular life which we daily life which बहुत words use करते हैं, जिसना word हैगा बड़ा simple, pass, right? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ suppose pass on, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, please pass on this information to others, right? pass ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ by ਲਗਾ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਾ, he passed by me, right? pass ਨਾਲ ਅਸੀਂ away ਲਗਾ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि दूर चले जाना, कि पास बाय नेड़े है तो पास अवे मतलब थोड़ा जिहा हट के, पास अवे दा इंटायरली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, इट मीन्स टू डाई, ही पास्ड अवे लास्ट वीक। सो मतलब असी केयरलेसली नहीं यूज कर सकते ਆਪਾਂ प्रपोजिशंस, वी हैव टू प्रैक्टिस देम रेगुलरली और थोड़े थोड़े लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हां दा इहो मीनिंग है, दे कैन नॉट बी टू मीनिंग्स टू वन पर्टिकुलर वर्ब, राइट? जे पास अवे यूज कर रहे हैं तो इहो मतलब रहना है, तो वी नीड टू मेमोराइज सर्टन थिंग्स कि थोड़े जैसी लर्न करनी है कि इस प्रपोजिशन दा ए यूजेज हैगा, एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न सो मेनी मोर। Okay, choose the correct phrasal verb. Prices of essential commodities have dashed in recent years. Essential मतलब जरूरत दी चीज़ां, important. Commodities मतलब things. Okay, gone by. Gone by दा फिर मतलब है चला जाना. The period gone by, the year gone by, मतलब जरा last year सीखा या पुराना year. Went off the way मतलब है कि चले जाना. और another sense इत्थे ते नहीं बनदा. Prices कित्थे चले गए? Turned on the way मतलब नहीं हैगा. Gone up. Prices of essential commodities have gone up in recent years. Okay. Lights in all the nearby villages dashed after the thunderstorm. Looked into मतलब देखना. Please look into my paper and see what are the mistakes. Came off मतलब कोई चीज हट जानी. The lid came off very easily. भी ढक्कन बड़ी आराम नाल खुल गया. कोई चीज टूट जाना या उतर जाना. Carried on मतलब कंटिन्यू करना. Please carry on with your work. अपना काम करी जाओ. And went out is the correct option here. मतलब जदों लाइट चली जानी. We cannot say light in all the nearby villages went. खाली went मतलब went मतलब किथे किथे गई. Went out मतलब लाइट खराब हो गई या बुझ गई. The publishers are planning to dash a cheap edition of their new dictionary. Okay, options. Bring out मतलब कढ़न दी कोशिश कर रहे हैं.
टू ब्रिंग समथिंग, कुछ लियाण की कोशिश कर रहे हैं। कैच अप ਹੁੰਦਾ कि किसी ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ, लेट अस कैच अप, लेट अस मीट एंड कैच अप ऑन ओल्ड टाइम्स, कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। गेट ऑन ਲਿਆਣਾ, एंड गेट ओवर मीन्स खत्म करना। प्लीज गेट ओवर विद इट, गेट ओवर विद दिस टॉपिक, या गेट ओवर विद योर सॉरो। तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ब्रिंग आउट। The question before the municipal corporation last week, okay, got along ਹੁੰਦਾ है कि किसी नाल अच्छी तरह तालमेल बैठना। I got along very well with your brother, कि बड़े अच्छी तरह से गलबात की थी। came up मतलब उठ के आया, कोई चीज सामने आनी डिस्कशन लई। so this is the correct answer। ਅਸੀਂ बाकी भी डिस्कस। came over मतलब वो आया, he came over to my place। and called on भी मतलब किसी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। he called on me, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਮ ਅਪ। ਦਿਸ ਡਾਊਟ ਕੇਮ ਅਪ, ਕਿਉਂ ਡਾਊਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗ੍ਰॉस ਇਨਜਸਟਿਸ ਮੀਟਡ ਆਊਟ ਟੂ देम। ਗ੍ਰॉस मतलब बड़ा क्लियर, इनजस्टिस जस्टिस ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਟਡ मतलब गिवन आउट टू देम, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਚੀਅਰਡ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੀਅਰਡ ਅਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਅਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਅਰ ਅਪ। ਪੈਕਡ ਅਪ मतलब ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪੈਕ ਅਪ योर बैग। क्राइड आउट मतलब आवाज उठाना। एंड गॉट ओवर मतलब किसी चीज ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗ੍ਰॉस। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗॉट ओवर ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, तो इत्थे की बनेगा, सेंस असी देखनी है। दे क्राइड आउट अगेंस्ट द ग्रॉस इनजस्टिस मीटेड आउट टू देम। शी हैज डैश हर माइंड टू स्टडी नर्सिंग फ्रॉम लंडन। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗਾ मेड अप। मेड अप मतलब ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ। ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ मतलब कोई चीज बंद हो जाना। शट मतलब शट द डोर। The office is shut down, the shop is shut down means shop बंद हो गई है। Cleared off कोई चीज अपना साफ कर देना। The ground was cleared off। Gone into जाना उत्थे, पर इत्थे है कि क्योंकि माइंड की गल हो रही है, उन्हें मन पक्का कर लिया। The correct answer will be made up। The lengthy list of suspects मतलब जिन्हां ते शक हुंदा है, has been dashed to 3 people। Lengthy list फिर अगे 3 people है, मतलब पहला लंबी सी हुन छोटी हो गई है। चलो द करेक्ट आंसर विल बी नैरोड डाउन, बिकॉज मेड अप दी गल नहीं बनती। मेड अप टू 3 people इज रॉन्ग। कैरीड ऑन का भी मतलब नहीं है इत्थे, या गॉन ओवर इज ऑल्सो नॉट सूटेबल। द करेक्ट आंसर इज नैरोड डाउन, कि लेंथी लिस्ट सीगी पहला, सस्पेक्ट से जिन्हां ते शक सीगा, हुण वो नैरो डाउन हो गई है, छोटी हो गई है, या फोकस आ गया है 3 लोगों के उत्ते। The candidate dash as a dynamic person during the interview। Next to ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next to this is the other meeting। came along ਉਹ ਆਣਾ। came across means ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, and crossed out। so ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ came across। the candidate came across मतलब ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ as a dynamic person। intelligent person ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। dynamic मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ during the interview। ਉਹਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ। the police finally dashed the main suspect। owned up, put through, threw up, tracked down। owned up मतलब कोई चीज ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। he owned up to his crime। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। put through मतलब ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ। he was put through lot of hardship। थ्रू अप इज कई बार जिस तरह तबीयत ठीक नहीं होंगी, यू वॉमिट इट आउट, तो ही थ्रू अप इन द मॉर्निंग। ट्रैक डाउन आएगा इत्थे करेक्ट आंसर, कि पुलिस ने फाइनली लब लिया, या दे कुड फाइंड आउट द मेन सस्पेक्ट। द इंटरव्यू वाज टफर देन ही हैड डैश। बम्प्ड इनटू मतलब किसी को अचानक ही मिल जाना कोई। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। कैरिड आउट कोई चीज, कोई एग्जीक्यूट करना कोई काम। ही कैरिड आउट दिस वर्क विद ग्रेट परफेक्शन। कॉल्ड ओवर किसी को बुलाना। आई हैव कॉल्ड ओवर, या कोई चीज कॉल ऑफ कर देनी, करने आप कॉल्ड ओवर मतलब बुलाना किसी को।
I have called him over to my place. ਇੱਥੇ word ਆਏਗਾ bargained for, ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ plan ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਨੀ tough ਸੀਗੀ. The interview was tougher than he had bargained for. ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ plan ਕੀਤਾ ਸੀ. Okay, now we go to the passage, second passage of the day, excerpt from an article titled Towards a Fair World, and that's an editorial. ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ current affairs ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, but we are looking at it from English point of view. ਦੇਖਣਾ ਕੀ difficult words ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. As the Black Lives Matter, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ movement ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ strongly, found traction. Traction means grasp. The world over, the debate over racial inequalities. What racial inequalities मतलब ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. Acquired tones that reflected localized version of racism and colorism. ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲੀਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ. ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਊਨ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀਟਿਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਏ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ? ਇੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਇਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫॉर द वॉइसेस, slamming मतलब fighting या struggling to fight, the bias for fairer skin getting many shades louder. बहुत टाइम तो चल रही है गल जिस तरह फेयरनेस क्रीम्स आंदियां हैं या लोकी कहते हैं भी गोरी लड़की चाहिए जी मैरिज वास्ते, हुण लोकी पब्लिकली कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग, वाई शुड वी हैव दैट क्रेज फॉर फेयर स्किन. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਵਾਸ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਟੇਕ ਨੋਟ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਐਂਗਸਟ. ਐਂਗਸਟ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਐਂਗਰ, ਪਬਲਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਵੌਇਸਿਸ ਆਫ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ एंड प्रोटेस्ट. तो इत्थों तक तो अमेरिका की ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि जो अमेरिका ਵਿੱਚ प्रोटेस्ट होया या बाकी कंट्रीज ਵਿੱਚ, यूरोप ਵਿੱਚ, कनाडा बाकी जगह प्रोटेस्ट होया, इंडिया ਵਿੱਚ या बाकी जगह जो होया है कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ लोकलाइज वर्जन आ गया, जो ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ लोकल प्रॉब्लम्स ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ फोकस ਕੀਤਾ ਗਿਆ आफ्टर दिस मूवमेंट ओनली. तो एक ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ. फेयर एंड लवली एक क्रीम है बनाते हैं, इट्स टॉप सेलिंग ब्रांड ऑक्यूपाइंग 80% of the market share in the category of creams promising the whitening of complexion. whitening मतलब complexion और लाइट करना towards white या towards light color, गोरेपन की तरफ ले जाना. उन्ना creams विच फेयर एंड लवली का 80% शेयर हैगा, मतलब इन्नी है पॉपुलर है, लोगों की इन्नी डिमांड है for the past 40 years and lapped up मतलब helplessly लोग इनू लेंदे है, very they eagerly they accept it. Eagerly accepted by millions of women grappling is fighting with the belief that dusky is थोड़ी जी dark
skin was not beautiful had come under fire. Under fire, again it's a phrase, criticism. CRITICISM. ओके, इस ब्रांड के अगेंस्ट भी लोगों ने आवाज उठाई कि वो लोगों को कहते हैं कि वाइटनिंग क्रीम है जी, लोग अपना इंकरेज होंगे हैं कि चलो असी भी अपना रंग गोरा करने की कोशिश करिए. मिलियंस ऑफ विमेन ग्रैपलिंग, फाइटिंग विद द बिलीफ, अंदर स्ट्रगल कर रही हैं उस बिलीफ नाल कि डस्की स्किन इज नॉट ब्यूटीफुल, कि जो थोड़ा सांवला है वो सोना नहीं हैगा, दैट पर्सन इज नॉट ब्यूटीफुल. और ए जड़ा बिलीफ है, ए जड़ा अप्रोच है, दैट हैज कम अंडर फायर, अंडर क्रिटिसिज्म बाय पीपल. Exactly a month after George Floyd's brutal death, brutal मतलब बड़ी cruel. The company announced that it would rebrand the product and drop the word fair. कंपनी ने अनाउंस किया कि ਅਸੀਂ फेयर ਦਾ जो हैगा टर्म होते फेयर एंड लवली विचों ਅਸੀਂ फेयर हटा देंगे, थोड़ी जी चेंजेस करांगे अपने प्रोडक्ट दे नाम विच, while committing itself to the ideal of a radiant and healthy skin of all colors. वो committed सीखे कि ठीक है साड़ी क्रीम है radiant करेगी स्किन, और radiant means shining. Glowing skin of all colors, कोई भी कलर होवे, dark होवे light होवे, skin should be glowing and healthy as a desirable goal. मतलब जो लोग चाहते हैं, इट शाइड अवे मीन्स अवॉइडेड. जान के अवॉइड मतलब जानबूझ के उन्होंने अवॉइड किया माफी मंगना. इट शाइड अवे फ्रॉम अपोलोजाइजिंग फॉर हैविंग कॉज मेंटल एगनी. एगनी इज पेन, टॉर्चर या पेन. To dark-skinned beauties with its promotion of the image of light skin as the epitome of beauty all these years. ठीक है, उन्होंने चेंज तो करता, अपना नाम चेंज करता, पर स्टिल they didn't apologize कि असी इन्ने सालों तो यो चीज प्रमोट करते आ रहे हैं कि लाइट स्किन ही perfect epitome. The pronunciation is epitome and the meaning is perfect example. She is the epitome of beauty and grace. मतलब she is the perfect example of beauty and grace. तो इन्हां दा कहना कि इन्ने सालां तो जो चल रहा सी डार्क स्किन ब्यूटी ਜਿਹੜੀ डार्क स्किन लेडी ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो मेंटल पेन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मेंटल टर्मोइल ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि सब एड्स विच देखो कहते जी गोरापन आ जाएगा, सोने बन जाओगे तुसी ये क्रीम ला के. तो जो बंदा नहीं सोना हैगा नेचुरली ਉਹਦੇ मन विच तो कॉम्प्लेक्स आंदा है. दे आर ऑलवेज अंडर दैट टर्मोइल, दैट पेन कि चलो जी असी भी ये यूज करके देख लेना शायद कुछ बेटर हो जाइए. उस गल करके इन्होंने माफी नहीं मंगी, ठीक है, नाम जरूर चेंज करने की प्रपोजल आई. A couple of weeks earlier, couple मतलब कुछ टाइम पहला, वैसे couple का मतलब होता है 2, couple of days, couple of years, या couple मतलब जोड़ा. A couple of weeks earlier, Johnson and Johnson, another global cosmetics giant, दूसरी कंपनी की गल हो रही है. ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड दा, जाइंट मीन्स वेरी जड़ी बड़ी अच्छी वड्डी कंपनी है, सक्सेसफुल बड़ा इन्हां हैगा रोल या काफ़ी प्रोडक्ट्स हैगे हैं. had decided to pull out the Neutrogena Fine Fairness line. उन्हां दे भी प्रोडक्ट सीगे Neutrogena Fine Fairness from the Indian market. उन्होंने इंडियन मार्केट तो हटा ले on the same grounds. The craze for paler skin types manifests मतलब shows, reflects itself most in the matrimonial arena. As dark and dusky dames are often made to feel unacceptable. क्रेज फॉर पेलर स्किन, गोरेपन का जो क्रेज है ज्यादातर सब तो ज्यादा कितने शो होंगे मैरिज की फील्ड में. मैट्रीमोनियल मीनस मैरिज, जो मैरिज जिस तरह मैरिज की फील्ड की तो कहो जी कुड़ी चाहिए जी, गोरी होवे जी, सोहनी होवे, ठीक है, कोई नहीं कहता जी काली कुड़ी चाहिए, अच्छी कुड़ी चाहिए, काली भी चलेगी, पर जी गोरी चाहिए है जी.
मैरिज दी फील्ड विच की होंदा डार्क एंड डस्की डेम्स, डेम्स मतलब लेडीज, इट्स अ फॉर्मल टर्म, आर मेड टू फील अनएक्सेप्टेबल कि सानू कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, साडे बारे कोई नहीं पूछदा या साडी कोई डिमांड नहीं हैगी। इन्फ्लुएंशियल कन्वर्सेशंस अराउंड द अनफेयरनेस ऑफ इट, इन्फ्लुएंशियल मतलब कि जिदे बारे कुछ असर हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग ते, अराउंड अनफेयरनेस ऑफ इट, अनफेयरनेस इत्थे मतलब हैगा गोरापन नहीं कहेगा, अनफेयर का मतलब है विच इज नॉट जस्ट, विच इज नॉट राइट। मेड द मैट्रिमोनियल वेबसाइट shaadi.com remove its filter for the skin color after a petition called out the racial bias inherent in it. shaadi.com साइट ते उन्होंने अपना हटाता स्किन कलर के बारे कोई इन्हां दा फिल्टर सीगा उन्होंने हटा ही दिता, क्योंकि लोगों ने कहा कि दिस इज इहदे विच क्लीयरली शो होंदा है, इनहेरेंट मीनस इट इज डीपली देयर, उन्हां दा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैगा इन्हां दे फिल्टर विच कि जरा पूछते हैं कि की कॉम्पलेक्शन हैगा, की कलर हैगा बंदे दे स्किन दा। हाउएवर दीज चेंजेस आर मेयरली कॉस्मेटिक, इत्थे कॉस्मेटिक का मतलब है कि खाली दिखावे वाली चेंजेस हैगी है, एंड जस्ट अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स दैट आइडियल फेयर वर्ल्ड। इत्थे फेयर का मतलब हैगा जस्ट, नॉट गोरा, जस्ट या राइट। in which the diversity of the human race is celebrated। ये जो चेंजेस असी कर रहे हैं कि चलो जी नाम बदलता, राइट, फिल्टर हटाता या ओपनली नहीं किया किसी ने भी गोरे बंदा चाहिए या गोरा बंदा होना चाहिए, ਉਹਦੇ करके कहते हैं these are just small changes, खाली ऊपरलियां चेंजेस हैगियां। कॉस्मेटिक ਦਾ ਇੱਥੇ मतलब हैगा सुपरफिशियल, सरफेस वाली चेंजेस हैगियां। राइट, दीज आर जस्ट सुपरफिशियल या सरफेस, खाली ऊपरी चेंजेस कर रहे हैं असी कि चलो नाम बदलता, कलर चेंज करता, बट एक्चुअल व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, वो गल आ रही है इस पैसेज विच अगे। Such $1 million businesses are likely to continue to flourish as their wares, though tweaked a bit in deference to popular sentiment, will not be starved of celebrity endorsements and gullible customers। इन्ने वड्डे जिहड़े बिजनेस हाउसेस हैगे हैं उन्हां दा ते they will continue to flourish मतलब उन्हां दी ते तरक्की होंदी ही रहेगी। Wares मतलब their things, their products। दो tweaked मतलब improve, indifference as a result to popular sentiment, will not be starved of celebrity endorsements and gullible customers। कि ये जो कंपनीज हैगी हैं इन्हां नूं तो कोई दिक्कत नहीं आनी, इन्हां दे प्रोडक्ट विकदे ही रहने। क्यों? क्योंकि इन्हां नूं चाहे उन्होंने चेंज करता, ट्वीक मतलब थोड़े इंप्रूव करता, नाम बदलता या कुछ भी चेंज कर सकते हो कि नहीं असीं इहदे च फेयरनेस इंग्रीडिएंट नहीं हैगा, स्किन नूं क्लीन रखने का इंग्रीडिएंट है, स्किन नूं हेल्दी करने का इंग्रीडिएंट है, कलर चेंज का कोई इंग्रीडिएंट नहीं पाया जी असी, चाहे चेंज भी कर दें बिकॉज लोगों की डिमांड हैगी है, पॉपुलर सेंटिमेंट विल नॉट बी स्टार्व्ड, दे विल नॉट बी स्टार्व्ड, दे विल नॉट नीड टू लुक फॉर सैलीब्रिटी इंडोर्समेंट्स। जैसा उन्होंने एड्स मिलती रहती हैं, बड़े सारे जो सैलीब्रिटी लोग हैं वो उन्होंने चीज़ों करते हैं, फॉलो करते हैं या उन्होंने चीज़ों बढ़ावा देंगे हैं। एंड गलिबल कस्टमर्स, गलिबल की होंगे ईजिली ट्रिक्ड, बेचारन कोई
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗਲੇਬਲ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਟ ਦਿਸ prejudice, what is prejudice is preconceived notion, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ which doesn't have any reason, right? That's called a prejudice. Bias ਹੋ ਸਕਦਾ partiality which is after knowing, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ notion, ਇੱਕ judgment ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ without knowing anything in detail, is too deeply embedded. Embedded मतलब fixed in our attitudes. Attitude is जो basic nature है साडी, and approaches, behavior. For it to vanish so soon, normally ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ approach, how do we behave? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਐਮਬੈਡਡ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੂਟਡ, ਫਿਕਸਡ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟੂ ਵੈਨਿਸ਼, ਗੋ ਅਵੇ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਨਰਚਰਿੰਗ। ਨਰਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰ। ਨਰਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰ। A mindset that is rid of the fetish for fair skin. जो है prejudice है, preconceived notion है, is too deeply fixed in our attitudes, embedded in our attitudes and approaches for it to vanish so soon. The ultimate game changer, मतलब जड़ी सब चीज पलट सकती है, change कर सकती है, lies in nurturing a mindset, सोच, mindset is सोच, that is rid of the fetish. Fetish is obsession, सनक। For fair skin, जब तक साडा वो प्रेजुडिस नहीं जाएगा, जो सनक है, जो ऑब्सेशन है सानू गोरेपन दा, जब तक वो अंदरों नहीं जाएगा, साडा माइंडसेट सानू नर्चर करना पएगा, उन्होंने हौली हौली इंकरेज करना पएगा अपन सोच नू, तब तक अपना प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं होनी। That's all for today, children. Thank you so much. Please go through the lectures and go through new words and practice them regularly. Thank you.